Hello friends, in this video we are going to discuss about plastids. Plastids are color pigment found in only plant. These are absent in animal cell. It is semi-autonomous structure. हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है जो अपना प्रोटीन खुद बनाता है. उसके पास डीएनए एंड राइबोसोम रहते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. तो सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर मीन्स इट कंटेन राइबोसोम and DNA. According to their pigment, plastids are divided into three types: chromoplast. Chromoplast is found in all colored except green. ग्रीन कलर छोड़ के सभी कलर के पिगमेंट आपको क्रोमोप्लास्ट के अंदर आते हैं. देन सेकंड इज द क्लोरोप्लास्ट. Chloroplasts are the green color pigment. It is found in all type of the plant which are takes place in the process of photosynthesis. And the third one is leucoplast. Leucoplasts are colorless pigment. इसके पास किसी भी तरह का कोई कलर आपका नहीं रहता. Then firstly we talk about chloroplast. इस लेसन में हमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखना है. क्लोरोप्लास्ट आर जनरली फाउंड इन green algae and higher plants. Higher plants that we call the gymnosperm and angiosperm. It contain chlorophyll. Chlorophyll is in the form of pigment and the color of chlorophyll is green. That's why the chloroplast look like a green. And these chlorophyll are the photosynthetic pigment. और these are help in photosynthesis process. Actually जो photosynthesis की process है आपकी यहाँ पे green pigment में होता. It help in the process of photosynthesis. That's why it is called kitchen of photosynthesis और kitchen of cell. क्योंकि यहाँ के food का preparation आपका chloroplast के अंदर होता है. Now here we draw the structure of chloroplast. Chloroplast is a capsule-like structure and it is distributed all over the cytoplasm. It is double-walled membrane and all both the membranes are smooth-walled. Inside the membrane, some stacks are present and these are arranged on one another. But inside the cytoplasm, they are irregularly placed. And that stack-like structure are joined with each other by some segment. Inside the cell, liquid material is present. Now we label it. It contains its own ribosome. It is scattered in the cytoplasm and DNA fragment. It is the outer membrane. Inner membrane. That is matrix, and that matrix and cytoplasm we called stroma. Ribosome. Lamellae. The connection between the two stacks we called lamella or lamellae, and these whole structure that we called granum. and इसका ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे thylakoid body and thylakoid membrane.
इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को अगर हम सेपरेटली ड्रॉन करते हैं, एक सिंगल स्ट्रक्चर हमने यहाँ ड्रॉन किया, तो इट इज़ ऑल्सो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। एंड इस मेम्ब्रेन के अंदर आपके सेंटर्स रहते हैं रेस्पायरेशन के, जहाँ पे एक्चुअल रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। दिस इज़ द DNA स्ट्रक्चर एंड it contains some starch granules or starch molecule. This is the typical structure of the chloroplast. Now we see the function of the chloroplast. Function of chloroplast. Chloroplast trap solar energy in the form of photon and use it to make food. क्योंकि आपका फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, तो सोलर एनर्जी हेल्प की वजह से आपका फूड का प्रिपरेशन करती है। क्रोमोप्लास्ट जो फर्स्ट टाइप के पिगमेंट हमने देखे, जो रैदर देन ग्रीन कलर रहते हैं, गिव्स कलर्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट like flower, fruits, bird, etc. And due to that attractive colors of the flowers and fruits, the insect are attracted for pollination. Leucoplast are colorless pigment, and these are help in store food in the form of carbohydrate, fat and protein. This is about the plastid. Thank you.